दोस्तों द हिंदू की ये रिपोर्ट बहुत चिंताजनक है। भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को कनाडा से वापस बुला लिया है और 19 अक्टूबर तक का वक्त दिया है कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को भारत से वापस जाने के लिए। दरअसल दोस्तों ये सारा मामला जुड़ा हुआ है पिछले साल जून में हुए हरदीप सिंह निज्जर के हत्या को लेकर। हरदीप सिंह निज्जर जो कि प्रो खालिस्तानी लीडर था, भारत ने उसे आतंकवादी घोषित किया हुआ था। हरदीप सिंह निज्जर कैनेडियन सिटीजनशिप लेके कनाडा में रहकर प्रो खालिस्तानी मूवमेंट चलाता था। पिछले साल जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसे साफ साफ भारत की साजिश बता दिया था और तब से ही भारत और कनाडा के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। भारत सरकार ने इससे साफ साफ इनकार किया है और राजनीतिक फ़ायदा उठाने की साजिश बताई है। दोस्तों मैं चाहता हूं आप प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस बयान को गौर से सुनिए और उसके बाद मैं आपसे आगे की खबर साझा करता हूं। Repercussions do you expect? Well, first of all, let's highlight that none of us want to be in this situation. This is not a choice that Canada made to create a chill in Canada-India relations. India is an important democracy, is a country with which we have deep historical people-to-people business ties at a time where the instability around geopolitics mean democracies have to stick together. That is why when we started to understand through intelligence agencies that India was possibly, if not probably, behind Nijjar's killing, the killing of a Canadian on Canadian soil last summer, our first choice, our first actions were to reach out, yes, to our Five Eyes partners, but also to the government of India, to say, we know this has happened. Work with us to fix this. We don't want to be having this fight, but obviously the killing of a Canadian on Canadian soil is not something that we can ignore as a country. So every step of the way, we have apprised India of what we know. I've spoken directly with Prime Minister Modi. We have engaged with intelligence counterparts. And unfortunately, every step of the way, both after I made the statement in the House of Commons last September and till now, the response of the Indian government has been to deny, to obfuscate, to attack me personally and the integrity of the Government of Canada and its officials and its police agencies. And we have simply said, we're going to allow our agencies to do the work, particularly to move from intelligence collection from agencies to police investigations that result in arrests, trials, and consequences within a rigorous and robust and independent judicial system. That has been our approach every step of the way. And indeed, over this past week, when the RCMP reached out to its law enforcement counterparts in India, there was a path where we could have worked together to ensure accountability and changes and steps that would have resulted in keeping Canadians safe, because that is our top priority. India, the Indian government, rejected those advances, rejected our attempts to find some way through this. And that brought us to this point of having to disrupt the chain of operations that go from Indian diplomats here in Canada to criminal organizations to direct violent impacts on Canadians right across this country. दोस्तों 13 अक्टूबर को कनाडा ने अपने सरकारी सूचना में लिखा कि अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की 2023 में हत्या में इंडियन हाई कमिश्नर का हाथ था।
उसके बाद 14 अक्टूबर को भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने इस एलिगेशन को बेबुनियादी बताया और बोला कि जस्टिन ट्रूडो इसे अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद भारत ने अपने हाई कमिश्नर संजय सिंह और बाकी डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का फैसला किया। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को 19 अक्टूबर तक भारत से जाने का आदेश दिया है। भारत की तरफ से बयान दिया गया है कि हमें कनाडा की मौजूदा सरकार के कमिटमेंट्स पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम अपने हाई कमिश्नर और बाकी डिप्लोमेट्स को वापस बुला रहे हैं। RCMP के माइक डुहेम ने कहा है कि उनके पास एविडेंस है जो बताता है कि कनाडा में हो रहे हत्याओं में इंडियन एजेंट्स का हाथ है। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने बहुत सख्त तेवर अपनाए हैं। उन्होंने कहा है कि वो कनाडा की धरती पर उनके नागरिकों को मारने और धमकाने की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। दोस्तों, इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बात की उम्मीद और अपेक्षा करती है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत कनाडा संबंधों के बेहद संवेदनशील और संकटपूर्ण मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों के नेता, प्रतिपक्ष और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को विश्वास में लेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही कनाडा के न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया है और ये बयान RSS से भी जुड़ा हुआ है। जगमीत सिंह ने कहा है कि हम इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करने के डिसीजन का समर्थन करते हैं और एक बार फिर आग्रह करते हैं कि भारत के डिप्लोमेट सेंसस दोबारा से लगाए जाने चाहिए और RSS को कनाडा में बैन किया जाना चाहिए और उन सभी के खिलाफ गंभीर से गंभीर कदम उठाए जाने चाहिए जो आपराधिक गतिविधि में शामिल थे। दोस्तों, इन सभी बयानों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत और कनाडा के रिश्तों में कितनी बड़ी दरार सामने आ चुकी है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे फिर किसी और नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।